Now, what is the case of effect of impurities on the melting point? Now, if you have some impurities present in the ice, okay, the melting point of a substance decreases. Again the same thing, मतलब ice melt नहीं होगा इतना easily. So how much you can decrease? So you can decrease from 0 to minus 22 degrees Celsius. Okay. So mixing salt, जब आपने salt mix किया ice के अंदर, okay, that ice will not melt easily. Now this concept is being utilized by making the freezing mixture by adding salt to the ice. Okay. So if you have seen kulfi wala, okay, the kulfi wala वो क्या करता है, एक बड़ा सा मटके में ice mixed with salt लेके घूमता रहता है. Okay. और उसमें उन्होंने क्या किया रहता है, वो कुल्फी रखा हुआ रहता है. सो इट इज कोल्ड. Okay, so this freezing mixture is used in preparing the, not in preparing kulfis, I can talk about in maintaining the temperature to set the kulfis. Okay, kulfis बनाने के लिए वो freezing mixture use नहीं करते हैं. So that's a wrong word. But anyways, I hope you understood कि द कुल्फी वाला क्या करता है, जो बाहर आपको कहीं पे भी बाहर लेके जाना है, सोचो एक काम कर सकते हो, लाइक यू नो आपको कोई कोल्ड ड्रिंक लेके जाना है एंड यू वांट टू मेंटेन दैट कोल्ड ड्रिंक फॉर अ लाइक कोल्ड, उसको रखना है, कूल रखना है फॉर अ लॉन्गर टाइम. व्हाट यू डू, थोड़ा सा आइस ले लो बॉक्स में. ओके, अभी वो जल्दी से पानी छूटेगा. सो व्हाट यू डू, मिक्स सम सॉल्ट and keep that bottle inside that mixture. तो बहुत देर लगेगा उसको मेल्ट होने को. So for longer time you can maintain the temperature. You can also do this. Okay. Now, what is the vaporization and boiling? So we already spoke about latent heat of vaporization, but let's understand the vaporization and the boiling part. Now, when you are changing the liquid to a gas, gas matlab vapor. Okay. How can you change the state from liquid to gas? By absorption of heat. Okay, so the change is done only because of absorption of heat at a constant temperature. Please don't forget this line, at a constant temperature. Okay, temperature constant है because latent heat का concept आता ही नहीं if the temperature is constant. Okay, the particular temperature at which the vaporization occurs is called boiling point of the liquid. Now in case of water the boiling point is 100 degrees Celsius. ठीक है. Similarly, the change from vapor to liquid, उसको हम क्या बोलते हैं, condensation. Now this can happen only when you are removing the heat or rejecting the heat. Okay, तो steam में से मैंने heat निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, it will get condensed to liquid. Okay, and that particular temperature is which the condensation occurs is called condensation point. Now in this case we are taking pure substance. Okay, so there is no impurities, nothing. So the boiling point and the condensation point, we are assuming that it is identical now. Okay, so let's see what happens. Heat energy is absorbed at a constant temperature during vaporization, while the same amount of heat energy is rejected during condensation for the same substance. Okay, same mass of the substance. So देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, ओके, जब बॉईल हो जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम. ओके, नाउ हीटिंग कर्व. तो टेक सम वाटर एट रूम टेम्परेचर, वही अपना बीकर ले लो एंड ओके एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर. नाउ दैट वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब वो अभी तक 100 पे पहुंचा नहीं है, 20 पे ही है. Now heat the flask by keeping it in over a Bunsen burner. Okay. Note the temperature after every half minute. तो देखो यहाँ पे if you observe 20 पे था पहले, इसलिए 20 से ड्रॉ करना स्टार्ट किया. Now after every half minute till the water starts boiling and the flask contains vapor, क्या होगा? At this stage bubbles are formed throughout the water. Okay, कहाँ तक जाएगा? 100 तक तो आपको थर्मोमीटर चेंज दिखाएगा, मतलब फ्रॉम 20 to 100
the thermometer will be showing you temperature change, okay, but after 100 there will be no temperature change. कब तक? जब तक पूरा का पूरा लिक्विड स्टीम नहीं बन जाता. Are you understanding? Like full water will become steam, तब तक there will be no increase in temperature. So if you will be seeing a straight line at 100, मतलब कुछ भी increase नहीं रहेगा. So this is a thermometer speaking, okay? So बहुत काफी देर तक वो पूरा का पूरा पानी वेपर बनने के लिए, yes it may, ओके तो अभी पूरा वेपर बन गया, वेपर होने के बाद देर कैन बी अ थर्मोमीटर चेंज. तो हो सकता है कि यहाँ पे एक आगे जाके लाइन इंक्रीज हो, मतलब सोचो पूरा वेपर होने के बाद देर विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज पॉसिबल. ओके सो बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पूरा का पूरा होने तक इट विल बी शोइंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नो इंक्रीज. So at this stage you have already, okay, plot a graph for temperature against time by taking the temperature on y-axis, and this is called heating curve for water. समझ में आया? Okay, did you understand this? Yes, ma'am. Okay, so from the graph it is observed that initially at A water is at 20. So when the heat energy is absorbed, the temperature is rising continuously. क्यों? क्योंकि मेरा state change नहीं हुआ. So when there is no change in state, तब तक हम change in state नहीं होगा तो क्या होगा, आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखाएगा. ओके, तो वही लिखा हुआ है, द टेम्परेचर इज राइजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज इट इज इन द लिक्विड फेज. एट बी, ये वाले पॉइंट पे लिक्विड ने पहली बार स्टीम बनना चालू किया, मतलब एक बबल निकला. ओके, so that time what will happen, temperature will stop rising. Okay, although heat energy is being continuously absorbed, लेकिन वो heat energy क्या करने के लिए यूज कर रहे हैं? To separate the intermolecular space between the molecules. Okay, intermolecular space को separate करने में उसका काम चालू है. Because if you notice, gas has molecules which are separated, मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं वो लोग. Okay, so the part BC is parallel to time axis and it is representing the boiling of water. The particular temperature in 100 degrees Celsius at the point B is the boiling point of water. Okay, now what is the change in volume on boiling? क्या होगा? Okay, remember expansion ही होता है, there is nothing else. All liquids expand on boiling. Okay, expand मतलब volume will increase. So 1 centimeter cube of water, okay, at 100 degrees Celsius becomes 1760 centimeter cube of steam at 100 degrees Celsius. क्यों? Because molecules are separated यार, दूर दूर भाग जाते हैं गैस में. So there will be an expansion only. Okay. Now what is the effect of pressure on the boiling point? Now this is very interesting and this we follow every day in our home. Matlab, I don't know whether you use pressure cooker or not. Okay, the boiling point increases with the increase in pressure and decreases with decrease in pressure. So what is the boiling point of pure water? At 1 atmospheric pressure is 100 degrees Celsius. Now if you want to increase the boiling point, मतलब मुझे चाहिए कि वो थोड़ा सा increase हो, तो मैं क्या यूज करूंगी? प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में क्या करते हैं? यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर. so what will happen? In a pressure cooker, steam is not allowed to escape out. Okay, so what happens in this case? The pressure is, मतलब pressure बहुत create होता है. So the pressure cooker becomes nearly 1.75 times the atmospheric pressure. तो क्या होता है? The boiling point of water inside the pressure cooker will now increase to around 120 degrees Celsius to 1.25 degrees Celsius. आपने कितना pressure create किया उसके ऊपर है. Okay, so thus the cooking of vegetables becomes much easier and faster, and since it gets sufficient heat energy before the water boils. तो बेसिकली सुनो, यदि बॉइलिंग पॉइंट को क्यों इंक्रीज करना है मेरे को? क्योंकि सोचो मेरा पानी जल्दी बॉईल हो गया
और मेरा सब्जी पका ही नहीं, ओके। तो देयरफॉर व्हाट आई डू कि मेरा पानी बॉईल नहीं होने तक हम क्या करेंगे, पहले सब्जी पका लेते हैं, ओके। तो व्हेन आई इंक्रीज माय बॉइलिंग पॉइंट, तो मेरा सब्जी तब तक पकता है, ओके। सो प्रेशर कुकर में क्या होता है, इट इज फास्टर एंड कुकर। इफ यू सी कि तुमने यदि पैन में रखा तो उसमें क्या हो जाता है, द स्टीम इज गेटिंग इवेपोरेटेड, क्योंकि प्रेशर नहीं होता है। इफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर पेरेंट्स या कोई भी खाना जब पकाता है, वो लोग ढक के पकाते हैं। व्हाई? ढक के पकाने का मतलब क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, यू आर नॉट ट्राइंग टू एस्केप द स्टीम, बिकॉज स्टीम को तुमने पकड़ के रखा तो व्हाट विल हैपन, द प्रेशर इंक्रीजेस। समझा? So the cooked material inside it being at high temperature remains warm for a long period. So ढक के रखोगे, so what will happen, the steam will not escape and also it will remain warm. इसलिए खाना ढक के रखोगे तो warm रहता है, okay? Any doubt in this case? Now at high altitudes such as hills and mountains, the atmospheric pressure is low. अब प्रॉब्लम क्या होगा, when the pressure is low the boiling point also will decrease, okay? तो इसका मतलब है 100 डिग्री पे हमारे यहाँ पे जब होता है, वहां पे तो 70-80 डिग्री पे ही वाटर बॉईल हो जाता है, ओके। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब कोई चीज पकता ही नहीं है, बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी गॉट बॉइल्ड। So when the atmospheric pressure is low, the water boils at a temperature lower than 100 degrees Celsius. So it does not provide the required heat energy to its content for cooking. Therefore cooking becomes very difficult and it takes much longer time in case, और उधर ना बहुत पानी डालना पड़ता है कुछ भी पकाने के लिए, okay? Okay. Now natural consequences of high specific latent heat, okay? Now snow on mountains does not melt all at once. क्यों? Because if you see for 1 kilogram of ice कितना आपको हीट लगेगा, 3,36,000, है ना? So it is due to this fact that it changes into water slowly as it gets heat energy from the sun. Okay, so if the latent heat would have been low, तो क्या होता, आप कम से कम हीट एनर्जी में आपके आइस मेल्ट हो जाते थे एंड देयर वुड हैव बीन अ फ्लड. So this is not good. So all the snow would have been melted in a short time on getting heat from the sun, and therefore there would be a flood in the river. But because of this ozone layer problem, what is happening? एक होल बन जा रहा है, तो heat coming from the sun is more now. इसलिए if you observe कि melt होने चालू हो गया है. Okay, so this is the reason. So you have to write, because of high specific latent heat of fusion, ice is having high specific latent heat of fusion, therefore it does not melt all at once. Now in cold countries, water in lakes and pond does not freeze all at once. Same thing. क्योंकि high रहता है, so what will happen? The water in the lake and the pond will have to liberate large quantity of heat to the surrounding. Because see, कुछ किसी को भी freeze होने से क्या होता है, उसमें से मुझे heat निकालना पड़ेगा. I have to take out that much heat. तो वाटर में से वो हीट निकालना टू दी सराउंडिंग, ओके, बिफोर फ्रीजिंग, उसको बहुत टाइम लगने वाला, तो इतना जल्दी पानी फ्रीज नहीं हो जाता, ओके। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस, सोचो ऊपर ऊपर आइस फ्रीज हो गया, बट नीचे नीचे नहीं होता है फ्रीज। तुमने देखा होगा कि जब कोई भी आइस ऐसे स्लाइड होता है, इफ देयर इज अ वाटर, मतलब एक रिवर के ऊपर आप देखोगे द सरफेस इज फ्रोजन, बट थोड़ा सा पोक करोगे तो नीचे पानी है, इट इज अ वाटर. So the layer of ice, if formed on water, it's a poor conductor of heat. So it will also prevent the loss of heat from water of lake, and hence it does not freeze all at once. ये तो होने से ही रहा, होता ही नहीं. You must have seen this. कि हमको पता ही नहीं चलता है कि नीचे रिवर है कि क्या है, पर थोड़ा सा भी अपना बॉडी प्रेशर डालोगे तो दैट आइस विल ब्रेक.
एंड देन यू विल, तुम रिवर पे गिर जाओगे, तुमको मालूम ही होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I already spoke about this. Drinks get cooled more quickly by adding piece of ice than the ice cold water at 0 degree Celsius. Now always understand 1 gram of ice, okay, कितना heat energy देगा? तो ice has to take, okay, नहीं, आइस को मेल्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ टेल मी, आइस को मेल्ट होने के लिए वो क्या करेगा? ड्रिंक में से हीट एनर्जी उठाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आइस को तुमने एक ड्रिंक में डाला, ओके, ना आइस को वाटर में कन्वर्ट होना होता है. तो आइस विल ट्राई टू टेक 336 जूल फ्रॉम द ड्रिंक टू मेल्ट इनटू वाटर. तो क्या होगा? व्हेन इट ट्राइज टू टेक दैट हीट, तो ड्रिंक क्या हो जाएगा? ड्रिंक विल बिकम कूल, बिकॉज ड्रिंक में से उतना हीट एनर्जी ले रहा है वो. ओके, फाइन. So, but in case of ice cold water is nothing. Ice cold water will क्या होगा? वो जो हमने पढ़ा था mc delta t, ice cold water will get converted into temperature. Final temperature थोड़ी देर में आ जाएगा, like 20 degree. तो जो your drink is 30 degree Celsius, उसमें तुमने 0 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला, तो क्या होगा? वो थोड़े देर बाद 0 से एक फाइनल टेम्परेचर पे आ जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डन Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t. बट इन केस ऑफ आइस ऐसा नहीं होता है. टू मेल्ट आइस रिक्वायर्स 336 जूल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम. हर एक ग्राम के लिए उसको 336 जूल्स चाहिए. तो इसलिए वो क्या करेगा? ड्रिंक को जल्दी ठंडा करेगा और फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए भी वो वैसे का वैसे रखेगा उसको. ओके, so the cooling produced by 1 gram of ice is more than 1 gram of water at 0 degree. I hope you understood. Fourth one, when ice in frozen lake starts melting, the surrounding becomes cold. Okay, melt हो रहा है तो क्या करेगा? It will try to absorb the heat. अरे वो heat कहाँ से लाएगा? That heat will be taken from the surrounding only ना. अभी सोचो कोई भी लेक है, उसके ऊपर आइस है. Now for that ice to melt, it requires some heat. तो that heat will be required, मतलब वो absorb करेगा from the surrounding. Surrounding में क्या हो जाएगा? तो फिर surrounding का temperature फट से decrease हो जाएगा. So surrounding becomes very cold. The reason is that quite a large amount of heat is required for melting the frozen lake, which is absorbed from the surrounding atmosphere. As a result, the temperature of the surrounding falls and it becomes very cold. Okay, the last point. It is generally more cold after a hailstorm, okay, then during or before the hailstorm. Okay, after the hailstorm क्या होता है? आइस तो ऑलरेडी पड़ी हुई रहेगी ना. ना आफ्टर द हेलस्टॉर्म द आइस इज एब्सॉर्बिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. ऑफ कोर्स ना, क्योंकि उसको मेल्ट होना है, उसको कितना देर अपने स्टेट में रहेगा. सो इट विल ट्राई टू एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, हेंस द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड. खत्म, इतना ही है. ओके,